Hello students, welcome to free online class Assam. আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ এক তেজস্বী और দয়াবাল বালক। এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা অতি চুটি আৰু ইজিকৈ দিয়া হৈছে যে তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়, তোমালোকে সহজে প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা মনত ৰাখিব পাৰা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে ভিডিঅ'টোত দুটাকৈ এনসাৰ দিয়া হৈছে, এটা অলপ শৰ্টকৈ দিয়া হৈছে আৰু এটা অলপ লংকৈ দিয়া হৈছে। সো যেটো তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়, যেটো তোমালোকে সহজ বুলি ভাবা, তোমালোকে সেই এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এবাৰ চেপ্টাৰটো পঢ়ি চাবা, তেনেহ'লে চেপ্টাৰটোত থকা কুৱেশ্যন আনসাৰকেইটা তোমালোকে অতি সহজে বুজি পাবা। সো চোৱা, প্ৰথমতে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দো। ইয়াৰ আণ্ডাৰত প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে, চোৱা, বীৰেশ্বৰ নে সাহস কা পৰিচয় कैसे दिया। সো বীৰেশ্বৰে নিজৰ সাহসৰ পৰিচয় কেনেকৈ দিছিলে সেইটো চোৱা। এনসাৰ হ'ব, বীৰেশ্বৰ নে সাহস কা পৰিচয় এক গোৰা গাড়ী কে নীচে ফঁসে বচ্চে কো বচা कर दिया। তাৰপিছত চোৱা, সেম কুৱেশ্যন মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনেৰে দুটাকৈ এনসাৰ দিয়া হৈছে, এটা অলপ শৰ্টকৈ আৰু এটা অলপ লংকৈ দিয়া হৈছে। চ' চোৱা, তোমালোকে যদি শৰ্টটো লিখিব বিচাৰা তেনেহ'লে এনেকৈ লিখিব পাৰা, ঘোঁৰা গাড়ী কে নীচে বছে ফঁসে বচ্চে কো বচা कर दिया। তাৰপিছত চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যন খ নম্বৰ, নৰেন্দ্ৰ নাথ কে গুৰু কौन थे, গুৰু से वो कैसे मिला। চ' নৰেন্দ্ৰ নাথৰ গুৰু কোন আছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ গুৰুৰ সৈতে কেনেকৈ লগ কৰিছিলে, লগ পাইছিলে সেইটো লিখিব লাগে। এনসাৰ হ'ব, চোৱা, নৰেন্দ্ৰ नाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, वो उनसे दक्षिण क्षेत्र काली मंदिर में मिले। सेम कुवेश्चन तुम्हारे शर्टके लिखिले एनेকৈ लिखिब पारा। मैं प्रत्येकটো एनसारते एनेকৈ चुआ हाइलाइट कर दिसो येलो कलर दी, ठीक है। तो तुम्हारे जो शर्टके लिखिब विचारा तेने तुम्हारे यू जी तलत हाइलाइट करा आछे तुम्हारे हेतु लिखि लबा, ठीक है। सो चुआ, ये शर्टके लिखिले एनेকৈ हम, रामकृष्ण परमहंस थे दक्षिण क्षेत्र काली मंदिर में मिले, ठीक है। तारपिছত नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया। आंसर होगा, नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारत की यात्रा किया। सो और शर्टके लिखिले तुम्हारे एटा हारिते लिखिब पारा, पूरे भारत की यात्रा किया। यातকৈ আৰু शर्टके लिखिब নোৱাৰি, जिमान शर्टके पारो मैं सिमान शर्टके दियार कारण चेष्टा কৰিছোঁ। सो तुम्हारे যদি जिमान যদি शर्टকৈ बिचरा তেনেহ'লে ইয়াতকৈ আৰু शर्ट तुम्हारे ক'তো নোপোৱা। तो तुम्हारे जो शर्टके विचारा तेने यार चाई लिखिब पारा, ठीक है। तुम्हारे शर्टके लिखिले जो तुम्हारे मार्क बेसि आए तुम्हारे बनाओ कुवेश्चनटोर सहित मिलाई तारपिছত लिखि দিব पारा, तेनेকৈ तुम्हारे फुल मार्क पाई जाबा, ठीक है। तारपिছত चुआ, नेक्स्ट, विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। आंसर होगा, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका का शिकागो शहर में हुआ था। और शर्टके लिखिले तुम्हारे ये लिखि दिबा, ठीक है। मैं पढ़ी शुनाई दिया ना, तुम्हारे ये बस लिखि लबा, ठीक है। तारपिছত चुआ, नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है। आंसर होगा, रामकृष्ण मिशन संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारे लोगों की सेवा करना है। और शर्टके लिखिले तुम्हारे ये लिखिबा, गरीब और बेसहारे लोगों की सेवा करना है। तारपिছত नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था, वो तो, ठीक है। आंसर होगा, स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान देश का भविष्य बदलने के लिए किया था। तारपिছত नेक्स्ट क्वेश्चन चुआ, सेम क्वेश्चन तुम्हारे शर्टके लिखिले ये लिखि लबा, ठीक है। तारपिছত 2 नम्बर क्वेश्चन चुआ, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। सो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो चुआ, प्रथम क्वेश्चन क्या है, बीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था। आंसर होगा, बीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर दान देता था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो जेनेকৈ সুধিছে যে बीरेश्वरे যেতিয়া নেকি ৰাস্তাৰে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ গৈ থাকে তেতিয়া ভিক্ষাৰীসকলক মাতি আনি কি কৰে, কুৱেশ্যনটো এইটো সুধিছে। চ' এনচাৰটোত কি হ'ব, এনচাৰটোত হ'ব যে बीरेश्वरे ভিক্ষাৰীসকলক মাতি আনি কি কৰে, ভিক্ষা দিছিলে, ঠিক আছে, দান দিছিলে। তাৰপিছত চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যন, स्कूल में बीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था। आंसर होगा, स्कूल में बीरेश्वर का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। तारपिছত नेक्स्ट क्वेश्चन चुआ, संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे मार्क कर रखिबा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोली। आंसर होगा, चुआ, संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुआ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और शर्टके लिखिले तुम्हारे बस नाम तो लिखि दिबा, स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। तारपिছত नेक्स्ट क्वेश्चन चुआ, अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था। आंसर होगा, अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंद नाम से नवाजा था, ठीक है। और शर्टके लिखिले तुम्हारे बस नाम तो लिखि दिबा। तारपिছত चुआ, नेक्स्ट एक नम्बर क्वेश्चन इतना
बेसहारे और लाचार लोगों को सहायता पहुंचाने वाली कुछ संस्थाओं के नाम बताओ। तो आंसर होगा स्वाम। बेसहारे और लाचार लोगों की मदद करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार है कि হ'ব চোৱা প্ৰথম হৈছে ৰামকৃষ্ণ মিছন, তাৰপিছত দ্বিতীয়তে হ'ব মিছন ৰিজ অফ চেৰিটি, তাৰপিছত ৰেড ক্ৰছ সোসাইটি। ঠিক আছে, और तुम्हारे शॉर्टके लिखिले केटा एनेके लिखिबा चोৱা बेसहारे और लाचार लोगों को मदद करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार हैं। रामकृष्ण मिशन, তাৰপিছত जो কোনে বনাইছিল এইটো स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित है। তাৰপিছত नेक्स्ट আছে मिशनरीज ऑफ चैरिटी, এইটো কোনে কৰিছিলে মাদাৰ টেৰেছা দ্বাৰা স্থাপিত है। মাদাৰ টেৰেছা এইটো স্থাপন কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত ৰেড ফৰ্চ সোসাইটি, এইটো ৰেড ক্ৰছ সোসাইটি এইটো কোনে কৰিছিলে এইটো ইয়াত লিখা हुआ নাই, सो তোমালোকে বাস লিখি দিবা এইটো কোনে কৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত 2 নম্বৰ क्वेश्चन চোৱা क्या तुमने कभी गरीब और बेसहारे लोगों की सहायता की है, अगर नहीं तो क्यों नहीं कर पाए लिखो। अगर सहायता की है तो कैसे लोगों की और किस प्रकार से सहायता की है बताओ। सो তোমালোকে প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো বুজিবা, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে তোমালোকে প্ৰথমতে এইটো বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা, তেনেহ'লে তোমালোকে এনচাৰ যিটো আছে সেইটো তোমালোকে ভালকৈ লিখিব পাৰিবা। যেনেকৈ চোৱা এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে তোমালোকে কেতিয়াবা গৰীব দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছানে, আৰু যদি কৰা নাই তেনেহ'লে কি কাৰণত তোমালোকে তেনেকুৱা মানুহক সহায় কৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে, প্ৰথম কুৱেশ্যন সেইটো সুধিছে। প্ৰথমতে মন কৰিবা, প্ৰথম কুৱেশ্যন সুধিছে তোমালোকে সহায় কৰিছানে নাই, সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে। চ' এইটো য়েছ বা ন' এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন সুধিছে যে যদি সহায় কৰা নাই কি কাৰণত তোমালোকে সহায় কৰিব পৰা নাই, আৰু যদি সহায় কৰিছা তেনেহ'লে কি সহায় কৰিছা সেইটো লিখিব লাগে। ঠিক আছে, চ' এনচাৰটো হ'ব চোৱা हाँ मैंने सहायता की है। मैंने सर्दियों में अपने परिवार के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों की कंबल बांटे थे। साथ ही मैं अपनी पुरानी किताबें गरीब बच्चों की पढ़ने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, और शॉर्ट के लिखे तुम अनेक लिखिबा हाँ मैंने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है। सर्दियों के दिनों में मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर सड़क किनारे रहने वाले गरीब लोगों को कंबल और गर्मी कपड़े बांटे हैं। इसके अलावा मैं अपनी पुरानी किताबों और कॉपियाँ उन गरीब बच्चों को दे देता हूँ जो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, सो तुम्हारे जी एन्सार तुम्हारे बेसि बेटार बुली भाबा, जी एन्सार तुम्हारे बेसि इजी है, तुम्हारे बेसि सहज बुली भाबा, तुम्हारे जिको एटा एन्सार यार पर लिखि लबा। ठीक है, तारपिছত चोৱা 3 नम्बर किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उनके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ो और उसके आधार पर आदर्श विद्यार्थी के दिनचर्या पर एक लेख लिखो। सो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। एक आदर्श विद्यार्थी के दिनचर्या अनुशासित होती है। वह सुबह जल्दी उठता है और एकाग्रता से पढ़ाई करता है। वह समय पर स्कूल जाता है और शिक्षकों का सम्मान करता है। शाम को अच्छी सेहत के लिए वो खेलकूद में भाग लेता है। बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद की तरह वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है और रात को समय पर सो जाता है। ठीक है, सो ইয়াত যিকেইটা নেকি ভাল ষ্টুডেণ্টৰ কাম হয়, যিকেইটা নেকি ষ্টুডেণ্টে কৰিব লগা কাম সেইকেইটা ইয়াত দিয়া হৈছে। চ' তোমালোকে এইটো ভালকৈ ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। ঠিক আছে, আৰু যদি তোমালোকে ভাবা যে সেইটো এনচাৰ তোমালোকৰ ভাল লগা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা एक आदर्श विद्यार्थी सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पढ़ाई करता है। वो समय पर स्कूल जाता है और शिक्षकों का आदर करता है। शाम को वो खेल कूद में भाग लेता है और हमेशा दूसरों की मदद करता है। रात को वो समय पर सो जाता है। ठीक है, তাৰপিছত 4 नंबर आओ समूह में चर्चा करें। विवेकानंद जी की कौन कौन सी बातें महापुरुष शंकरदेव से मिलती हैं। सो ইয়াত কৈছে যে বিবেকানন্দজীৰ কোন কোনকেইটা কথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত মিল খাইছিলে সেইকেইটাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। ঠিক আছে, চ' এনচাৰ হ'ব চোৱা जीव सेवा। प्रथमটো কি আছিলে, प्रथम मिलটো আছিলে जीव सेवा। दोनों मानते थे कि गरीबों और जीवों की सेवा ही सच्ची पूजा है। তাৰপিছত समाज सुधार। दोनों ने छुआछूत
जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। তাৰপিছত তৃতীয়তে चेतना जगाना। विवेकानंद जी ने युवाओं के प्रति प्रेरित किया, तो शंकरदेव जी ने कला संस्कृति से समाज को जगाया। और तुम लोग शॉर्टके लिखिला निके लिखि लबा, जीव सेवा, गरीब और जीवों की सेवा ही सच्ची पूजा है। তাৰপিছত समाज सुधार, दोनों ने भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया। তাৰপিছত चेतना, विवेकानंद जी ने युवाओं को और शंकरदेव जी ने कला संस्कृति से समाज को जगाया। ठीक আছে। তাৰপিছত চোৱা ভাষা অধ্যয়ন। তাৰ আণ্ডাৰত কি আছে চোৱা। 1 নম্বৰ আছে संधि शब्द का अर्थ है मेल। परस्पर निकटस्थ दो शब्द के प्रथम की ध्वनि और दूसरे की अधध्वनि के बीच जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। सो এইটো সন্ধি কি হয় তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, সেইটো তোমালোকে পঢ়িবা। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা কেইটামান সন্ধি ভঙা দিয়া হৈ আছে। সন্ধি জোৰা কেনেকৈ লগায়, যেনেকৈ বিদ্যাযোগালয় বিদ্যালয়, তাৰপিছত পূব যোগ উত্তৰ পূৰ্বাত্তৰ, ঠিক আছে, পূৰ্বাত্তৰ, তাৰপিছত হিমালয় হিমযোগালয় হিমালয়, এনেকৈ বাকীকেইটা আৰু কেইটামান দিয়া হৈ আছে। এইকেইটা তোমালোকে সন্ধি ভাঙিব দিছে। ঠিক আছে, যেনেকৈ মেঘালয় দিয়া আছে মেঘযোগালয় হ'ব, তাৰপিছত বিদ্যাৰ্থী দিয়া আছে বিদ্যাযোগ অৰ্থী হ'ব। ঠিক আছে, ভেৰি ইজি হয় এইকেইটা, তোমালোকে নিজে পাৰিবা মই জানো। তোমালোকে এইকেইটা নিজে কৰিবা। ঠিক আছে, যদিও মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক, কিন্তু তোমালোকে এইটো নিজেই কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত চোৱা কেইটামান উপসৰ্গৰ বিষয়ে দিয়া হৈ আছে, এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'বা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা ইয়াত ৰেখাংকিত উপসৰ্গ का प्रयोग करके अन्य दो शब्द बनाओ। सो ইয়াত চোৱা ৰেখাংকিত উপসৰ্গ কি দিয়া আছে, বি এটা উপসৰ্গ হয়। এই উপসৰ্গকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমটো উদাহৰণ এটা দিয়া হৈ আছে বিৰোধ। এনেকৈ তোমালোকে আৰু দুটাকৈ লিখিব লাগে, যেনেকৈ হ'ব বিজ্ঞান বিদেশ, এনেকৈ তাৰপিছত চোৱা আছে ইয়াৰ কি হ'ব চোৱা, उपवन उपयोग, তাৰপিছত सुपुत्र सुगम, प्रकाश प्रलय, अभिनेत्रा अभिलाषा। ঠিক আছে, সেইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি ল'বা। আৰু যদি তোমালোকে নিজে দুই এটা লিখিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কি দিছে, तुम लोग य एवं ईत प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बताओ। যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰযুগ য় ৰাষ্ট্ৰীয়, প্ৰভাৱযুগ ঈদ প্ৰভাৱিত, এনেকৈ আৰু দুটা ইয়াত উদাহৰণ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু প্ৰভাৱিত। আৰু এনেকৈ তোমালোকে আৰু দুটামান লিখিব লাগে, যেনেকৈ হ'ব জাতীয় দৰ্শনীয়, তাৰপিছত আনন্দিত আৰু প্ৰমাণিত। ঠিক আছে, সেইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। তাৰপিছত প্ৰত্যয় জোৰকৰ শব্দ বনাও। ইয়াত কৈছে প্ৰত্যয় জোৰকৰ শব্দ বনাও, যেনেকৈ তোমালোকে ওপৰত কৰি আহিছা অলৰেডি, এনেকৈ বাকীকেইটা কৰিব লাগে। সেইকেইটা মই কৰিয়ে দিছোঁ, যদি তোমালোকে নিজে পাৰিবা তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা এইকেইটা। ঠিক আছে, বাকীখিনি এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা, এইখিনি তোমালোকৰ নলেজৰ কাৰণে দিছে। চ' তোমালোকে পঢ়িবা, মই ইমানখিনি পঢ়ি থকা নাই, মই বাছ তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা কৰি দিছোঁ। তোমালোকে এইকেইটা যিকেইটা পঢ়াৰ ৰিডিং দিবৰ কাৰণে আছে, তোমালোকে নিজৰ বুজিবৰ কাৰণে আছে, এইকেইটা তোমালোকে নিজে পঢ়িবা, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। মই ইমান ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি থকা নাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, নিম্নলিখিত বাক্যকো শুদ্ধ ৰূপে লিখো। চ' এইকেইটা শুদ্ধ কৰি লিখিব লাগে, যেনেকৈ প্ৰথম দিয়া আছে চোৱা, মেৰা বা মেৰি নাম দীপিকা হে। চ' ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি চাব লাগিব, এইটো স্ত্ৰীলিংগ নে পুলিংগ, হয়নে? চ' দীপিকা কি হ'ব, স্ত্ৰীলিংগ। চ' ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, মেৰি হ'ব। ঠিক আছে, আৰু পুলিংগ হ'লে মেৰা হ'ব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেৰা নাম দীপিকা হে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, হামাৰে পিতাজী আ ৰহে হে। চ' ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, এনচাৰ হ'ব হামাৰে পিতাজী আ ৰহে হে। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, হামাৰে বা तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है। ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है। আৰু যদি ইয়াত हमारे होल হয় তেনেহ'লে এনেকৈ হ'ব, हमारे दोस्त बाजार से जा रहे हैं, এনেকৈ হ'লেও এনেকৈ হ'ল হয়। ইয়াত रहा है এনেকৈ নহয়, এইটো राहे হ'ল হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, ভাৰত কা বা কি বা কে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা কা হ'ব নে কি হ'ব নে কে হ'ব, এইটো লিখিব লাগে। এনচাৰ হ'ব চোৱা, ভাৰত কা ইতিহাস গৌৰৱময় হে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইখিনি যিকেইটা দিয়া হৈ আছে তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা। ঠিক আছে, চোৱা কিহৰ বিষয়ে দিয়া হৈ আছে, विद्यार्थी पाठ के आधार पर विवेकानंद जी के जीवन के महत्वपूर्ण बातों को छोटे छोटे कार्ड पर लिखकर शिक्षण कोण में रख देंगे। ঠিক আছে, এইকেইটা তোমালোকে স্বামী বিবেকানন্দ
যিৰ কথা দিয়া হৈ আছে তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা এইকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকক অলপ লিখিব দিছে। চ' এইকেইটা মই অলপ লিখি দিছোঁ। চোৱা যেনেকৈ स्वामी का जन्म 1863 इंग्रजी में हुआ था। उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम थे भुवनेश्वरी देवी। उनकी पढ़ाई कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में शुरू हुई। उनके पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। स्वामी जी ने एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की जिनका नाम है रामकृष्ण मिशन, और अनेक लोगों उनके शिष्य भी बन गए। उनके मृत्यु 1902 की 4 जुलाई को हुई। ठीक है। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट की दिसे, ऐसे ही अन्य महान व्यक्ति के जन्म से जुड़े सूचनाएं अथवा किस्से कहानियाँ आदि छोटे छोटे कार्डों पर लिखकर शिक्षण कोण में रखे जा सकते हैं। सो ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ আৰু কেইটামান মহাপুৰুষৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। চ' চোৱা মই এটা লিখি দিছোঁ। ইয়াত চোৱা জন্ম 14 अप्रैल 1891 माह में हुआ था। पहचान भारतीय स्वाधीनता संविधान में निर्माता। कार्य किया आছিলে सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष। ठीक है। सो स्टूडेंट्स এইখিনিতে তোমালোকে এই চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নটোবোৰ শেষ হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তোমালোকৰ সৰু এটা কমেণ্ট, এটা লাইক, এটা শ্বেয়াৰে মোক বহু পৰিমাণে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। চ' যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা, তাৰ পৰা চাব পাৰিবা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিবা। তাত সকলো চেপ্টাৰৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়ালকৈ দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ।